I'm going to be looking for is some common sense that the recovery is still fragile. We passed this tax cut package precisely to make sure that people had more money in their pockets, that their paychecks were larger. We provided these tax credits and incentives for businesses. But if the steps that we take then prompt thousands of layoffs in state or local government, or core vital functions of government aren't performed properly, well, that could also have a dampening impact on our recovery as well. So my measure is going to be, are we doing things in a sensible way, meeting core functions, not endangering our recovery? In some cases, like defense, for example, Secretary Gates has already testified, if we're operating, even operating under the current continuing resolution is putting significant strains on our ability to make sure our troops have what they need to perform their missions in Afghanistan. Further slashes would impair our ability to meet our mission. And so, we've got to be careful. Again, let's use a scalpel. Let's not use a machete. And if we do that, there should be no reason at all for a government shutdown. And I think people should be careful about, being too loose in terms of talking about a government shutdown, because this is not an abstraction. People don't get their Social Security checks. They don't get their veterans payments. Basic functions shut down, and that also would have a adverse effect on our economic recovery. It'd be destabilizing at a time when I think everybody is hopeful that we can start growing this economy quicker. So I'm looking forward to having a conversation, but the key here is for people to be practical and not to score political points. That's true for all of us. And I think if we take that approach, we can navigate the situation short term and then deal with the problem long term. With respect to Mr. Davis, our diplomat in Pakistan, we've got a very simple principle here, that every country in the world that is party to the Vienna Convention on Diplomatic Relations has upheld in the past and should uphold in the future. And that is, if our diplomats are in another country, then they are not subject to that country's local prosecution. We respect it with respect to diplomats who are here. We expect Pakistan, that's a signatory, and recognize Mr. Davis as a diplomat to abide by this same convention. And the reason this is an important principle is if it starts being fair game on our ambassadors around the world, including in dangerous places, where we may have differences with those governments, and our ambassadors or our various embassy personnel are having to deliver tough messages to countries where we disagree with them on X, Y, Z, and they start being vulnerable to prosecution locally, that's untenable. It means they can't do their job, and that's why we respect these conventions, and every country should as well. So we're going to be continuing to work with the Pakistani government to get this person released, and obviously part of, for those who aren't familiar with the background on this, a couple of Pakistanis were killed in a incident between Mr. Davis in Pakistan. So obviously we're concerned about the loss of life. We're not callous about that, but there's a broader principle at stake that I think we have to uphold. How serious have your threats been to the Pakistani government if they don't hand him over? Well, I'm not going to discuss the specific exchanges that we've had, but we've been very firm about this being an important priority. Ed Henry. Thank you, Mr. President. I wanted to go back to Egypt because there was some perception around the world that maybe you were too cautious during that crisis and were kind of a step behind the protesters. I know that, as you said, there was dramatic change in
3 weeks, and some of us wanted it to go even faster than that. But having said that, I अमरीकी सदर बराक ओबामा की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है, जहाँ इससे पहले उन्होंने कुछ अमरीकी फाइनेंशियल जो सूरत हाल है, मौशी सूरत हाल को संभालने की बात की, तो वहीं उनसे सवाल किया गया था रेमंड डेविस से मुताल्लिक भी, जिस पर जवाब देते हुए उनका ये कहना है कि हर मुल्क पर वियना कन्वेंशन लागू होता है, पाकिस्तान वियना कन्वेंशन की पासदारी करे और इसी के तहत रेमंड डेविस को सिफारतकार का इस्तिस्ना दिया जाए। उनका कहना था कि पाकिस्तान से कहा है कि सिफारतकार रेमंड डेविस को रिहा किया जाए। उन्होंने कहा कि रेमंड की रिहाई का न सिर्फ मुतालबा किया, बल्कि पाकिस्तान को चाहिए कि ममालिक के दरमियान इख्तलाफात होते हैं, एम्बेसीज के दरमियान भी मामलात हो सकते हैं, लेकिन जब कोई सिफारतकार किसी दूसरे मुल्क में मौजूद होता है तो उस पर वियना कन्वेंशन लागू होता है, न कि उस मुल्क के कानून को लागू किया जाता है। अमरीकी सदर बराक ओबामा ने रेमंड डेविस के मामले पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना वही मौक़िफ़ दोहराया जो अब तक अमरीकी एम्बेसी की तरफ से और अमेरिका के मुख्तलिफ ऑफिसर्स की तरफ से सामने आया है कि वियना कन्वेंशन के तहत पाकिस्तान रेमंड डेविस को रिहा करे। लाहौर में होने वाले जानी नुकसान का जिक्र भी किया अमरीकी सदर ओबामा ने। उन्होंने कहा कि इसका अफसोस है, लेकिन क्योंकि वियना कन्वेंशन के तहत रेमंड डेविस वहां मौजूद है, वो सिफारतकार हैं, लिहाजा उसे रिहाई दी जाए। उनका कहना था मुल्क का कानून उस पर लागू नहीं होगा, बल्कि वियना कन्वेंशन के तहत इस तमाम सूरत हाल से निपटा जाएगा। अमरीकी सदर बराक ओबामा का कहना है कि पाकिस्तान रेमंड डेविस को सिफारतकार समझे, एक सिफारतकार के तौर पर उसे लिया जाए और उसे सिफारत इस्तिस्ना हासिल है वियना कन्वेंशन के तहत, और पाकिस्तानी हुकूमत से यही मुतालबा किया गया है कि उसे फौरी तौर पर रिहा किया जाए। अमरीकी सदर बराक ओबामा ने अब से कुछ देर पहले व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि रेमंड डेविस को पाकिस्तान सिफारतकार तस्लीम करे और सिफारतकार तस्लीम करते हुए उसे वियना कन्वेंशन के तहत रिहाई दी जाए। पाकिस्तान को वियना कन्वेंशन पर अमल करना चाहिए, उसकी पासदारी करनी चाहिए। इस तमाम मामले को अगर सामने रखा जाए, 27 जनवरी को लाहौर में पेश आया वाकया, उसके बाद बेशतर बयानात अमेरिका की तरफ से आए, अमेरिकी एम्बेसी की तरफ से आए। अब से कुछ देर बाद ये भी इत्तलात हैं कि सेनेटर जॉन कैरी भी पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह के आके इस पूरे मामले पर यह कहा है कि रेमंड डेविस को पाकिस्तान सिफारतकार समझे, पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि वो वियना कन्वेंशन पर अमल दरामद करे और वियना कन्वेंशन के तहत रेमंड डेविस को रिहा किया जाए। सेनेटर जॉन कैरी पाकिस्तान पहुंच रहे हैं और बड़ी वाज़ेह सूरत हाल हो रही है इस तरह से कि अहम शख्सियात से, हुकूमती शख्सियात से उनकी मुलाकातें होंगी। आने से पहले उन्होंने साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से भी टेलीफोनिक राब्ता किया, इसी तरह मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां नवाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता किया, और इस तमाम सूरत हाल में ऐसा लग रहा है कि अमेरिका की तरफ से दबाव पाकिस्तान पर मजीद बढ़ाया जा रहा है रेमंड डेविस की रिहाई को लेकर। रेमंड डेविस का मामला इस वक्त पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान सिफारती ताल्लुकात में भी तनाव का सबब बना हुआ है। जब नई काबीना ने हलफ उठाया तो साबका वजीर खारजा जिनके बारे में ख्याल किया जा रहा था कि वो नई काबीना में शामिल होंगे, वो नई काबीना में शामिल नहीं थे। उसके बाद उनकी जानिब से जो बयानात सामने आए, जिन्होंने गुफ्तगू की, उसमें यही पता चला कि उनके ऊपर भी ये दबाव था कि रेमंड डेविस के मामले पर या तो उन्हें सिफारतकार माना जाए, लेकिन वजीर खारजा, साबका वजीर खारजा का कहना है कि उनके पास जितने दस्तावेजात, डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, वो किसी तरह से इस बात को सहारा नहीं दे रहे कि रेमंड डेविस सिफारतकार है। लेकिन अमेरिका की जानिब से जो पहला बयान पाकिस्तान में अमेरिकी सिफारतकारों की जानिब से सामने आया, उसमें कहा गया था कि रेमंड डेविस लाहौर कौंसिल खाने का एक रुकन है, एक टेक्निकल रुकन है। उसके बाद ये कहा गया कि नहीं, वो इस्लामाबाद एम्बेसी का कारकुन है, और फिर ये कहा गया कि पाकिस्तान रेमंड डेविस को सिफारतकार माने, सिफारतकार तस्लीम करे और वियना कन्वेंशन के तहत रेमंड डेविस को रिहाई दी जाए। इस वक्त ये तमाम मामला अदालत में है। पाकिस्तान हुकूमत का ये कहना है, गुज़िश्ता रोज़ ऐवान सदर की जानिब से कहा गया था कि मामला अदालत में, अदालत इस मामले को हल करेगी, जबकि अमेरिका के दफ्तर खारजा का ये कहना है कि जो उनके पास सबूत मौजूद हैं, जो उनके पास दस्तावेजात मौजूद है कि रेमंड डेविस एक सिफारतकार है, वो उसे पाकिस्तान की अदालतों में भी पेश करेंगे। लाहौर में ये मामला चल रहा है, अदालत में मौजूद है। मुस्लिम लीग नून जो बड़ी अहम जमात है, वहां से भी यही मौक़िफ़ सामने आया है कि मामला अदालत में है और अदालत जिस तरह से इस मामले को लेकर चलेगी उसी का साथ दिया जाएगा। रेमंड डेविस पाकिस्तानी कैद में। अमरीकी सदर ओबामा का यह मुतालबा है कि रेमंड डेविस को पाकिस्तान हुकूमत सिफारतकार तस्लीम करे। वियना कन्वेंशन